Alright, so with that we'll move to round 2 of silver category. और इस राउंड में हमारे पास 6 पिक्स हैं, starting with Usman Qadir going to Peshawar Zalmi. That is an interesting one, but मुझे नहीं पता कि उस्मान कादिर का उनकी मतलब इंजरी हुई थी. I don't know if he's fully recovered, but even if he is, do you think कि keeping Usman Qadir with Zalmi is also one of those strategic moves, या इनको playing 11 में हम काफ़ी ज़्यादा देखेंगे इस साल Zalmi के साथ? मेरे हिसाब से you will see him in the playing 11. Last year भी he was part of Peshawar Zalmi और उसकी performances इतनी बुरी नहीं थी क्योंकि obviously you know flat pitches पे bowling कराना is not an easy job और अगर आप कुछ मैचेस में इसकी bowling देखें तो आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो आपको लगेगा यार कि ये इसने बहुत मार खाई है, मगर अब एक्चुअल मैचेस जो मैंने एक दो देखे थे उसमें इसके बहुत कैचेस ड्रॉप किए थे इसकी बॉलिंग पे. तो जो ही इज ऑलवेज अ विकेट टेकर. ठीक है कि इसकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी का इशू है कि लाइन या लेंथ में कंसिस्टेंसी उस तरह से नहीं है जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि होनी चाहिए, बट ही इज़ अ गुड बॉलर. और अनफॉर्चुनेटली उस्मान को अगर आप PSL में देखें तो उस तरह से कंसिस्टेंट चांसेस नहीं मिले. तो आई रियली होप के ज़ल्मी यू नो एंड विद बाबर फैक्टर इन ज़ल्मी आई होप के उस्मान को कंसिस्टेंट चांसेस मिलेंगे एंड देन वी विल बी एबल टू सी कि उसकी परफॉर्मेंसेस इस तरह की हैं कि यू नो ही कैन कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ नेशनल टीम. Magar, I think this will be a good opportunity for him as well. And he's such a big name, or he comes with a lot of promise. And I think it's about time that Usman Qadir becomes as big of a bowler that he actually is. I mean, he's a great bowler. There's no doubt about that. बस ये है कि स्टैट्स उनके फेवर में कभी कभार नहीं जाते और उनके जैसा कि आपने बताया कि कैचेस बहुत छूटते हैं ये सब. So I'm hoping to see a more consistent Usman Qadir starting with this PSL because he deserves that. You know, we want to see him. We want to see more of him, especially with Pakistan. So let's see how that goes. So moving on to Sohaib Maqsood going to Islamabad United this time. That we've talked about Islamabad's explosive batting और उनका जो mindset हमें लगता है कि they always want to go batting heavy in PSL. तो going with Sohaib Maqsood, it makes sense actually because Sohaib Maqsood आपको middle order में जब वो चलते हैं तो you know he gives you that quick boost in runs. तो with Islamabad's batting already so strong, and Sohaib Maqsood has had a good record in PSL, I would say, you know, whichever team he's played for. So do you think Sohaib Maqsood will get to play in the playing 11 quite a bit, or will he be kept out for certain scenarios, certain situations? कि अच्छा ऐसे कभी मैच फलां टीम के साथ हो, you know, we can bring you in. What do you think about that, Shaheryar? काफी इंटरेस्टिंग पिक है ये. I can see that he can be part of playing 11. There is a very slim chance of him making into the playing 11, you know, क्योंकि इस्लामाबाद के बाद टॉप ऑर्डर में ऑप्शंस इतने हैं कि you just you know I mean like it will take some time to figure out के what will be their preferred playing 11. क्योंकि I mean obviously Alex Hales जो है वो शायद पहले हाफ में अवेलेबल नहीं है, तो I think he will join the team like sometime in March, like first week of March or something. तो जो February वाले जो matches हैं, at least half of those matches he won't be available. अब अगर आप उस सिनेरियो में देखते हैं तो then they will still have I think Rahmanullah Gurbaz are also going to miss first few games because उनकी series आ गई है. Yep. तो I think he will be able to make it into the playing 11 when you know Rahmanullah Gurbaz and Alex Hales are not available. Because then he can open with Paul Sterling and and then Colin Munro can play in the middle order because he has been playing in the middle order recently. या फिर Colin Munro and Paul Sterling opens and he comes at one down. Right. So that will be something but कितना ज़्यादा कितना consistent chances मिलेंगे सोएब को, that is remain to be seen, but I do think he will be able to play first few games until their main players become available. Got it. So basically, जब उनके main players होंगे तो Sohaib might not be the first pick or the first choice, but because Islamabad is situation में होंगे तो he will get to play quite a few games for Islamabad.
Right. Acha, moving on to Usman Khan going from Multan Sultans. Sharia, if I'm not wrong, Usman Khan is basically Usman Shinwari, right? No, he's a wicket keeper batter basically Oh, okay, from okay. Karachi. अभी आपने पता नहीं देखा हो कि नहीं बीपीएल में जिस गेम में Oh, आजम yes, खान yes, ने yes. सेंचुरी Okay, मारी थी yeah. I know. I got it उसी now. राइट तो Yeah. ही इज दैट उस्मान खान. वाओ सो शेरियर थोड़ा बताइए हमें उस्मान खान के बारे में बिकॉज मैंने उस्मान खान का नाम जो है नाउ दैट यू रिमाइंडेड मी तो बीपीएल में जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसके बाद से ही बिकेम समबडी दैट आई सॉर्ट ऑफ बेसिकली उस परफॉर्मेंस के बाद से इनका नाम सुनने में आया तो क्या ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में काफी अर्से से खेल रहे हैं इज ही वन ऑफ द न्यू प्लेयर्स व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट उस्मान खान यार उस्मान खान डोमेस्टिक में तो उस तरह से विजिबल नहीं है बट ही इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ कराची में रमज़ान टूर्नामेंट होता है जो कि काफ़ी पॉपुलर है. तो ये बेसिकली वहाँ वो टूर्नामेंट काफ़ी खेलता है ये और क्लब लेवल क्रिकेट वगैरह इसकी होती है मगर ही वाज फर्स्ट केम इनटू द सीन when I think it was PSL 6 when Quetta picked him और इन्होंने ओपन की थी in the same year where when Saim Ayub was playing. तो साइम अयूब जब इतना अच्छा नहीं कर रहा था तो उस्मान खान ने उसको रिप्लेस किया था एंड ही प्लेड क्वाइट वेल. इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि क्वेटा ने उसको रिटेन नहीं किया था. ये लाइक दे नेवर पिक्ड हिम अगेन मगर उसकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी थी. ही इज़ एन अग्रेसिव बैटर और with a lot of potential. Obviously he's still raw, उस पे काम होने की ज़रूरत है but he has that potential के he can be a attacking option in the future. तो I mean it's good कि मुल्तान ने इनको pick किया है but obviously that the sort of batting मुल्तान have he will hardly get any राइट game unless के कोई बहुत ज़्यादा इंजरी के इश्यूज हो जाए उनको टॉप 6 में तो then he will fit in या वो कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दे दें कि भाई के सारे मैचेस जीत जाएं तो शायद डेड रबर गेम्स इसको मिल जाएं. एग्जैक्टली या But I don't see him getting any chances in Multan. But he will be around again with some big names. So that itself will be a good experience for him. और शेरियर आपने रमजान टूर्नामेंट का जिक्र किया कराची का इज दैट अ टेप बॉल टूर्नामेंट और या वो हार्ड बॉल टूर्नामेंट होता है नहीं वो हार्ड बॉल टूर्नामेंट होता है और काफ़ी हमारे जो लोकल स्टार्स हैं जैसे उमर अकमल वगैरह वो प्रॉपर टूर्नामेंट होता है बाहर से लोग आके खेलते हैं. ओह वाओ तो आप कभी जाके देखिए कि काफ़ी अच्छी इसके मैचेस होते हैं. नहीं मैंने इसका सुना बहुत है आई थिंक आपसे भी जिक्र सुना है पहले लेकिन आई थिंक आई नेवर पेड अटेंशन कि ये टेप बॉल टूर्नामेंट है क्या बिकॉज मेरी आपकी जब भी अक्सर बात होती थी तो हम टेप बॉल के बारे में बहुत बात करते थे सो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर फॉर आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स जिनको ना पता हो इसका कि ये व्हाट काइंड ऑफ टूर्नामेंट इट इज Okay, that sounds great. We'll definitely look forward to hopefully seeing Usman Khan playing for Multan Sultans quite a bit this year. Acha, moving on to Mohammad Akhlaq going to Karachi Kings. Again, I'm not, very familiar with this name. तो शहरियार क्या आप हमें बताएंगे थोड़ा सा मोहम्मद अखलाक के बारे में मोहम्मद अखलाक बेसिकली जो है वो आजकल सेंट्रल पंजाब का पार्ट है और इस साल उन्होंने सेकंड 11 से खेला है सेंट्रल पंजाब में मगर वैसे वो प्रीवियस सीजन्स में मेन 11 से खेलते रहे हैं. He has been part of Islamabad United. I think every now and then Islamabad picks him up as a backup wicketkeeper. I think last year भी शायद he was part of their squad मगर I could be wrong. मगर ये उस तरह से PSL में he was not able to perform. एक तो उसको consistent matches उस तरह से नहीं मिले हैं मगर जितने भी मिले हैं he is not able to score. कराची ने प्राइमरीली इनको पिक किया एज अ बैकअप विकेट कीपिंग ऑप्शन और विच इज़ अ गुड ऑप्शन मगर ये कि करंट फॉर्म किस तरह की है दैट इज़ रिमेन टू बी सीन. मैंने सेकंड 11 के कुछ मैचेस फॉलो किए थे and he was doing well in those matches मगर obviously PSL will be the bigger stage तो I don't know कि वो किस तरह से अगर इनको गेम मिलता है तो ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं बट ही इज़ अ डिसेंट विकेट कीपर. कश्मीर प्रीमियर लीग में एक्चुअली ये उसी टीम का पार्ट थे जो टीम जीती थी जिसमें शोएब मलिक कैप्टन थे वसीम अकरम मेंटोर थे या प्रेसिडेंट थे.
तो he's a good player. It's just के एक तो कंसिस्टेंट चांसेस नहीं मिले हैं, और जितने भी चांसेस मिले हैं ही इज नॉट एबल टू अवेल इट. तो होपफुली अगर उनको कराची में चांस मिलता है तो यू नो ही इज समबडी हु कैन ओपन, हु कैन प्ले इन द मिडल ऑर्डर, एंड ही इज एन एग्रेसिव टाइप ऑफ प्लेयर. तो यू नो तो होपफुली अगर उनको चांस मिलता है तो ही कैन रियली पुट इट आउट देयर के हाउ गुड ऑफ अ प्लेयर ही इज. बिल्कुल, and at least he will get to share the dressing room with such big names in Karachi. तो कभी कभार वो एक्सपोजर और वो जो आपको एक मौका मिलता है औरों से बात करने का, उनसे सीखने का, ज़ाहिर नेट प्रैक्टिस में ये लोग साथ होंगे तो hopefully he can pick a thing or two from other players with his opportunity with Karachi Kings. Moving on to Mirza Tahir Beg with Lahore Qalandars. He was also one of the unknown names for me, Shaheryar. And when I looked him up, I realized कि जो अभी लाहौर कलंदर्स ने उनका जो एक कलंदर्स का एक ग्रुप है, जो आप कह सकते हैं कि उनका एक ऑनगोइंग डेवलपमेंट 11 सॉर्ट ऑफ जो टीम होती है, उसमें रिसेंटली नेमीबिया का टूर किया था कलंदर्स ने. आई थिंक इट वाज लाइक इन अगस्त सितंबर अक्टूबर टाइम फ्रेम लास्ट राइट. ईयर. तो उसमें मिर्जा ताहिर बेग, ही इज ओनली 23 years of age. He is a batter and he got to play a few games with them. कुछ scores किए थे, he made like 40s, 60s, कुछ single figures या कुछ ऐसे, but at least he's getting a chance to play and hoping to prove himself with the Qalandar tour. Mirza Tahir Beg, I think he might, in my opinion, Sharon, I would love to have your opinion on this as well, कि he might also be one of those filler players for Lahore this year, कि ठीक है अगर कोई बहुत ही dead rubber game हो जिसमें they want to give chances to certain players, then he might come in. But as a regular member of the playing 11, I don't see that happening too much. Would you agree with that when it comes to Mirza Tahir Beg? आई डू, क्योंकि एक तो ये पीडीपी के प्लेयर हैं. आई थिंक दे कॉल इट क्लास ऑफ 22. Oh, अच्छा. हाँ, तो ये क्लास ऑफ 22 के प्लेयर हैं ये. और इनके बारे में है कि जो कि ड्राफ्ट में भी जिस तरह से शाहीन ने जो इनकी अनाउंसमेंट की थी कि ही इज़ लाइक एन टिम डेविड ऑफ लाहौर. तो ही इज़ अ वेरी supposedly he's a very hard hitter, aggressive batter. तो अब चांसेस आई डोंट नो कि वो चांसेस मिलते हैं कि नहीं मिलते, क्योंकि जो करंट जो शेप है लाहौर का उसमें ऑब्वियसली यू विल हार्डली सी हिम प्ले Right. अनलेस के कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हो. बट इट्स अ गुड ऑप्शन टू हैव. इट विल बी अ गुड एक्सपोजर फॉर हिम. और एक डग आउट से भी बैठ के आज बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, देखते हैं, बिल्कुल, of ऑब्जर्व course. करते हैं. तो it will only improve his game. Magar we would love to see him play and see what kind of a player he is. Absolutely. And it's so good to see some of these young players getting picked up in, categories higher than supplementary emerging. इससे इनको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि इनकी कैपेबिलिटीज जो हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंटली देखा जा रहा है. एंड लाइक यू सेड, गेटिंग टू basically spending time with some of the senior players, some of the international players in your squad, that in itself could do wonders for you. Acha Shahriyar, so moving on to Mohammad Zahid going with Quetta Gladiators. I'm not sure that I know much about Mohammad Zahid. So can you please tell us, especially me, about this player and how does he fit into the mix of players Quetta Gladiators has for this year's PSL? अच्छा, इनकी ना काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ही इज बेसिकली अ टेप बॉल बॉलर नोन एज कर्नल जाहिद. कर्नल जाहिद, ओके. कर्नल जाहिद, अगर आप जैसे टेप बॉल्स की जो आप वीडियोस की आप पहले बात कर रहे थे ना, या he is a very known personality in tape ball cricket. I think currently he is in UAE playing over there. और इंटरेस्टिंगली कर्नल जाहिद जो हैं वो पीडीपी का भी पार्ट रह चुके हैं लाहौर कलंदर की. अच्छा. और लाहौर कलंदर की पता नहीं किसी टूर्नामेंट में ही हैज बीन पार्ट ऑफ देयर टीम. आई थिंक एक टूर्नामेंट हुआ था यूएई में जिसमें मुख्तलिफ जैसे काउंटी की भी टीम्स आई थी एंड व्हाट नॉट. एंड आई थिंक ही हैज प्लेड T10 टू, आई एम नॉट श्योर. बट तो अब इस साल जो है वो क्वेटा ने पिक किया है. ही इज एक्सप्रेस पेस बॉलर, बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं. तो ऑब्वियसली PSL विल बी अ बिग स्टेज फॉर हिम. और आई मीन
with Naseem and Hasnan and Umaid Asif, I don't see him playing in the playing 11 unless ke, injuries hoti hain. But it will be a good exposure for him. To be around in such a big environment. अच्छा शरीर आपने जैसे मुझे बताया कर्नल जाहिद का तो आई डिड अ क्विक गूगल सर्च एंड वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट आई सॉ वाज जो गूगल पे क्वेश्चंस आते हैं तो एक क्वेश्चन था कि कर्नल जाहिद फास्टेस्ट बॉल स्पीड और कुछ वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे थी कि फास्टेस्ट टेप बॉलर ऑफ पाकिस्तान ये वो इस तरह से सो दैट्स प्रीटी अमेजिंग सीम्स लाइक ही हैज अ लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग ऑनलाइन तो मुझे लगता है कोयटा को कोई ना कोई चांस तो देना पड़ेगा जस्ट टू अपीज द फैंस इसको बेसिकली कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि ही इज राइट अप देयर विद हारिस रऊफ. इंटरेस्टिंग तो आई मीन ऑब्वियसली अब मैचेस मिलेंगे तो देखने को मिलेगा, बट मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह देखी थी तो आई मीन ही लुक्ड गुड. मगर ऑब्वियसली पीएसएल इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, तो वहाँ पे वहाँ पे बस सही से पता चलेगा कि हाउ गुड ऑफ अ बॉलर ही इज. Absolutely. And he could be a great bowler given that he like any chance he gets, if he grabs that opportunity with both hands and makes an impact, then he will be there for a long, long time because he's still pretty young. He has a lot of fan following in tape ball circuit. And if that translates into the proper cricket, then who knows, maybe he might get as much fame as Haris Rauf is getting these days. All right, so with that, we'll move on to round 3 of Salul category, starting with Ahmed Daniel going to Lahore Qalandars. How do you see this, Shahriyar? Ahmed Daniel going to Lahore Qalandars this year? I mean, he is similar to Dilbar Hussain, PDP player, and he was part of Lahore Qalandars in PSL 6. I think last year भी शायद part था, but obviously he could not get games because their pacers were doing fantastic job. So obviously for bench strength, he is a good addition, but same as last year, कितने games मिलते हैं अहमद को, we will have to see. इस साल इन्होंने सेंट्रल पंजाब से एक प्रॉपर डोमेस्टिक सीजन खेला है और आई थिंक T20 में जो सेमीफाइनल सेंट्रल पंजाब हारा था वो भी इन्हीं की बदौलत हारा था. अच्छा. तो क्योंकि ये अनवर अली के हत्थे चढ़ गए थे और अनवर अली ने इनको एक ही ओवर Okay. में ठीक ठाक स्कोर लगा दिया था. I think I probably know that game. डिफेंडिंग तो Yep. तो obviously he's a work in progress. He's a typical tape ball bowler. शॉर्ट रन अप से आके शोल्डर वाली बॉलिंग कराना. तो but he obviously now that he is playing domestic cricket, he will only improve. और ही इज अ गुड प्रोस्पेक्ट. जो पीएसएल के गेम इन्होंने यूएई में खेले थे, ही वाज क्वाइट इफेक्टिव. ऑब्वियसली पाकिस्तान की पिचेस आर डिफरेंट, तो मगर ये कि बेंच स्ट्रेंथ के लिए इट वाज अ गुड पिक. That's interesting. All right. So moving on to Samin Gul going to Multan Sultans. And for our viewers and listeners, जो third round था सिविल कैटेगरी का उसमें टोटल 5 पिक्स थी और 3 पिक्स मुल्तान सुल्तान्स ने की हैं. और हम पिछली कैटेगरीज में जो बात करते हैं उसमें वी हैव टॉक्ड क्वाइट अ बिट अबाउट हाउ मेनी प्लेयर्स मुल्तान सुल्तान्स have picked and the kind of core that they have formed around their strong batting lineup this year. And with that in mind, Samin Gul, who's a bowler, उन्होंने आई थिंक जब PSL स्टार्ट हुआ था या उनकी जो मोस्ट PSL अपीयरेंसेस रही हैं वो शायद पेशावर ज़ल्मी के लिए रही हैं, राइट शहरियार? So he has some good experience with playing in PSL. So how do you see his impact in Multan Sultans in this year's PSL? I think it will be a great addition to Multan's bowling lineup, especially क्योंकि अभी जैसे जैसे आप अगर आप ओवरऑल स्क्वाड देखें पीएसएल में, PSL 8 का मुल्तान का, तो एक फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा है कि जिसमें सबको थोड़ी बहुत रिजर्वेशंस हैं कि इनएक्सपीरियंस है और कोई बड़ा नाम नहीं है. तो उस लिहाज से देखा जाए तो शाहनवाज धानी इज द ओनली प्लेयर, ओनली बॉलर जो लगता है कि जो who will be the leading who will lead the attack. Right. मगर समीन गुल का एडिशन is going to boost that pace
डिपार्टमेंट, क्योंकि समीन के साथ समीन की स्ट्रेंथ एक तो उसके साथ पेस भी है, बट ही कैन स्विंग द बॉल, और उसकी बिल्कुल। काफ़ी अच्छी नई बॉल से बॉलिंग होती है। तो आई कैन सी हिम बीइंग अ पार्ट ऑफ प्लेइंग 11, और he will definitely make an impact. एंड वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग बहुत हैवी है इस साल, तो एनी एडिशन दैट वी कैन सी इन देयर बॉलिंग डिपार्टमेंट वुड बी अ ट्रीट टू वॉच. All right, so moving on to Roman Reis, finally making a comeback in this year's PSL. हमने रोमान रेस को देखा कि पहले जब PSL में खेले हैं काफ़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की, और उसके बाद इफ़ यू रिमेंबर शहरियार 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये आए थे और इन्होंने आते ही इम्पैक्ट किया था. एंड यू नो समबडी हु लेफ्ट आर्म बॉलर, डिसेंट पेस, स्मार्ट बॉलर आई वुड से. और इनकी जो सेलिब्रेशंस थी वो बहुत डिफरेंट थी, एंड समटाइम्स बैटर्स यूज्ड टू गेट पिस्ड ऑफ विद हिज peculiar celebrations. इंजरी हुई बीच में, काफ़ी ईयर से आउट ऑफ सर्किट रहे, बट आई एम रियली हैप्पी टू सी हिम बैक विद इस्लामाबाद यूनाइटेड दिस ईयर. Or great guy, runs his foundation, does a lot of philanthropy work. So really happy to see him back. So, but how many games would he get to play? That remains to be seen. Because अभी हमने कुछ देर पहले ही बात की थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है, उसका स्ट्रक्चर है, it's quite strong, from batting to bowling. But Roman Reis is somebody who can make a pretty quick impact. But like I said, it remains to be seen how many games he gets to play, because इंजरी से वापस आ रहे हैं, बहुत अरसे बाद इस लेवल पे क्रिकेट खेलेंगे, so it's not always easy. So how do you see his inclusion with Islamabad United this year? I think it is a good addition, क्योंकि असल में इस्लामाबाद की अगर आप बॉलिंग देखें ना, तो जैसे वहाँ पे फ़हीम है, वसीम Mm-hmm. जूनियर है, हसन अली हैं, और फजल फारूकी हैं, तो यंग ग्रुप है, मगर देखा जाए तो उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है, Right. लाइक और एक्सपीरियंस उस तरह से नहीं है, और प्लस ये कि जो करंट फॉर्म भी जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है. लाइक हसन अली ही इज नॉट क्वाइट अप देयर. फ़हीम की रिसेंट फॉर्म अच्छी है बीबीएल में, वसीम जूनियर की भी बॉलिंग अच्छी है. मेरा जहाँ तक मेरी जो गट फीलिंग है वो ये है कि रोमान विल बी पार्ट ऑफ देयर bowling core, क्योंकि he brings in that T20 experience. Mm-hmm. He's a very cunning bowler, और obviously home conditions में खेल रहे हैं, तो he can be somebody who can run the bowling department. और पिछले सीजन्स में जो इस्लामाबाद का जो एक इशू रहा है वो यही कि बॉलिंग में उनको थोड़े से इश्यूज आए हैं, क्योंकि उस Mm-hmm. तरह से एक्सपीरियंस नहीं है. Right. और जो फॉरेन बॉलर्स भी जो उन्होंने लिए थे वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे बिल्कुल. लोकल कंडीशंस के हवाले से. तो आई पर्सनली थिंक के रोमान विल बी पार्ट ऑफ देयर प्लेइंग 11, अनलेस के उनको कोई फिटनेस के इश्यूज हैं या इंजरी इश्यूज हैं. बट आई थिंक के he will be and he should be part of their playing 11, just because the kind of experience he has. और वेरिएशंस बहुत अच्छी करते हैं. अगर आप जिन बॉलर्स के आपने नाम लिए, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर और हसन अली, एक्सप्रेस बॉलर्स हैं. खासकर वसीम जूनियर जो है, ही इज नाउ स्टार्टेड गेटिंग दैट मिडल 140s. लेकिन जो वेरिएशंस रोमान रेस लेकर आते हैं वो शायद और किसी के पास उतनी अच्छी नहीं है. एंड आई हैव बीन फॉलोइंग रोमान रेस ऑन सोशल मीडिया. ये काफ़ी अपनी फिटनेस वगैरह पे काम कर रहे हैं, नेट्स में बहुत बॉलिंग कर रहे हैं. तो let's hope for the best. Our prayers and best wishes are with Roman Reis, so that he remains fit, and hoping that we get to see him ball quite a bit in this year's PSL. Actually, next one is Anwar Ali going to Multan Sultans, and this was a very interesting move for me because Anwar Ali ka jo Umar associates, the people that own Quetta Gladiators, उनके साथ जो एसोसिएशन रही है अनवर अली की, वो हमेशा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे बॉन्ड लगता था. आपको शायद याद हो या आपने देखा हो, नोट किया हो शहरियार के जो टेप बॉल का टूर्नामेंट अनवर अली खेल रहे थे कुछ अर्सा पहले कराची में, तो जो उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी उस पर उमर एसोसिएट्स की शर्ट थी और पीछे ओनर लिखा हुआ था. बेसिकली जो कमेंटेटर्स थे वो कह रहे थे कि ही इज सॉर्ट ऑफ गिविंग ए ट्रिब्यूट और गिविंग हिज रिस्पेक्ट टू मिस्टर उमर, जो कि ओनर हैं उमर एसोसिएट्स के. और he's been part of Quetta Gladiators for so long, so it was sort of not really interesting, but it was kind of surprising to me that he is moving away from Gladiators. अनवर अली का एक अच्छा, दोनों टीम्स की ना फिलॉसफी थोड़ी डिफरेंट है. तो
पहले जब क्वेटा का जब पार्ट थे अनवर अली, तो उस वक्त क्योंकि उनको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था, जस्ट टू कीप दैट बैलेंस। राइट। अभी जो रिसेंटली जो इवन लास्ट ईयर भी जो उनकी टीम थी और जो इस साल भी टीम नजर आ रही है, वो है कि वो काफी उन्होंने अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन किया है और प्रॉपर उन्होंने बैटिंग ऐड की है टिल लाइक नंबर 6-7, और फिर उसके बाद उनकी बॉलिंग स्टार्ट हो रही है। तो लाइक व्हेन नवाज जैसा प्लेयर जो है वो 7वें नंबर पे बैटिंग करने आएगा, हम्म। तो देन यू कैन ओनली इमेजिन के क्या डेप्थ है उनकी बैटिंग में। बिल्कुल। तो ऑन दी अदर हैंड मुल्तान का ये है कि मुल्तान की क्योंकि ऑलरेडी इतनी हैवी बैटिंग है, टॉप 6 उनके इतने हैवी हैं कि दे कैन अफोर्ड टू हैव समबडी लाइक अनवर अली इन द मिडल, के जो उनको 1-2 ओवर भी दे दे, प्लस ये कि वो लोअर डाउन दी ऑर्डर आके थोड़ी हिटिंग भी कर ले। राइट। तो वो टीम कॉम्बिनेशन आई थिंक मुल्तान का बेहतर, अनवर अली बेहतर फिट इन करते हैं, जिसकी वजह से भी लास्ट ईयर उन्होंने पिक किया था, और इस साल वो रिटेन तो नहीं कर सकते थे, मगर दे 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 मैनेज टू पिक हिम बैक। हम्म। अब गेम्स कितने मिलते हैं अनवर अली को ये देखना होगा हमें, बट ये कि बेंच स्ट्रेंथ के लिए ही इज अ गुड पिक इन सिल्वर कैटेगरी। डेफिनेटली। और जैसा आपने कहा कि मिडिल में आकर वो ओवर्स भी करा सकते हैं, ही ब्रिंग्स अ लॉट, आई मीन plenty of experience in T20 cricket. So that's something Multan Sultans can definitely bank on with having him in the squad. Acha, last one in silver category, round 3, is Mohammad Sarwar Afridi going to Multan Sultans. And I frankly do not know much about this player. So, Shaheryar, can you tell us something about Mr. Afridi going to Sultans this year, and how can he be part of the combination that we have spoken about when it comes to Multan Sultans? अच्छा, सरवर आफरीदी जो हैं वो इस साल के से खेले थे Mm-hmm. नेशनल T20 में, और रेगुलरली भी वो केपीके से ही खेलते हैं, मिडल ऑर्डर बैटर हैं। ही इज़ वेरी सिमिलर टू अनवर अली। बॉलिंग में उस तरह से लाइक ही इज़ अ वेरी लाइक अ मीडियम पेस बॉलर, जो कि 1-2 ओवर आपको करा देगा, और लाइक अ पोलार्ड टाइप बॉलर। ठीक है, Okay. जैसे पोलार्ड एक जिस तरह की बॉलिंग करा दे, उस तरह का सरवर अफरीदी बॉलर है। बैटिंग अच्छी है, 5वें 6वें नंबर पर बैटिंग करते हैं। टिपिकली ही इज एन अग्रेसिव बैटर, बट ही इज अ गुड हेड ऑन हिज शोल्डर इन टर्म्स ऑफ बैटिंग के, जहां पर he can make the decision whether to go for the hit or just play around. Right. तो ही इज नॉट समबडी लाइक के आंखें बंद करके मारने वाला प्लेयर है, बट I mean obviously he will be the bench strength player there, मगर he's a good player, and hopefully के अगर इसको चांस मिलता है तो hopefully he can he should perform for the team, but मैंने जो जितना भी फॉलो किया है डोमेस्टिक में, he looks to be a good player. That's good to know. And like we've been saying earlier as well, कि all these players जो कि जिनको बहुत ज़्यादा चांसेस पहले नहीं मिले पीएसएल में, या वो प्लेयर्स जो इस दफ़ा डेब्यू करेंगे पीएसएल में या डिफरेंट टीम्स के लिए जा रहे हैं, वी विश देम ऑल द बेस्ट, बिकॉज वी वांट टू सी मोर एंड मोर न्यू फेसेस। दैट्स बीन अ बेंचमार्क ऑफ पीएसएल एनीवे, राइट, कि बहुत सारे नए प्लेयर्स हमें दिए हैं, और जो प्लेयर्स हमारे सर्किट में रहे भी हैं बहुत अरसे से, दे गेट टू प्ले विद सो मेनी इंटरनेशनल स्टार्स, एंड दैट्स अ चांस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू improve their game further. So we hope for the best. And with that, I think that's all we have in silver category. And we'll come back to you guys with our analysis on emerging and also supplementary picks in the next couple episodes.